Hello friend, I am Sarika. Welcome back to my channel Sarika's Creative Hub. Friend, in today's video we are making a simple basic flower and leaf technique by using a brush pen to create a watercolor effect. फ्रेंड, जनरली जो वाटर कलर पेपर होते हैं वो 3 डिफरेंट सरफेस टाइप में आते हैं। फर्स्ट इज़ हॉट प्रेस पेपर, सेकेंड इज़ कोल्ड प्रेस एंड थर्ड इज़ रफ पेपर। जो हॉट प्रेस पेपर होते हैं वो काफ़ी स्मूथ सरफेस के होते हैं, उनमें कोई टेक्सचर नहीं दिखता है और जनरली इसे आर्टिस्ट यूज करते हैं। और जो कोल्ड प्रेस पेपर होते हैं उसमें स्लाइटली टेक्सचर हमें विजिबल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। और ये बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा होता है पेंटिंग करने के लिए। और जो रफ़ वाटर कलर पेपर होते हैं उनके टेक्सचर काफ़ी रफ़ होते हैं। फ्रेंड, आज की पेंटिंग हम कोल्ड प्रेस पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोज से। ये पेपर इतने थिक होते हैं कि कलर करने के बावजूद भी सिंक नहीं होते और आप चाहें तो पेपर के बैक साइड में भी कलर कर सकते हैं। और फिर से हम ब्रश को वाटर में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर को टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और ब्रश को कलर पे रख के पीछे की तरफ धीरे धीरे हम बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड, देखा आपने कितने सिंपल स्टेप से हमारा रोज बनके रेडी हो गया। नेक्स्ट मैं एक और रोज आपको बना के दिखाती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा रोज बनाना।
और इस तरह से हमारा एक और रोज बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हम एक और फ्लावर बनाएंगे। ये भी काफ़ी सिंपल है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम दो कलर को मिक्स करते हुए ब्रश पेन की हेल्प से हम शेडिंग इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल पाए। तो फ्रेंड, देखा आपने कैसे ब्रश पेन की हेल्प से हम कैसे सिंपल फ्लावर और लीफ बना सकते हैं और वाटर कलर इफ़ेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।